Hello, my dear students. This video is the continuation of lectures regarding carbon and its compound. So this is the last part in which we will be talking about the compounds which we have to know in the chapter carbon and its compounds. ओके तो जो कंपाउंड्स हमें पता होने चाहिए वो क्या क्या है कि इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और इसके अलावा जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ इथेनॉल। इथेनॉल, इसको इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए? C2H5OH। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो इस तरह से बनाया जाएगा। ओके, तो ये होता है इथेनॉल का स्ट्रक्चर। इसके बाद तो आफ्टर स्ट्रक्चर लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। So industrially, ethanol is prepared by molasses. What is molasses? Molasses is a byproduct of sugar industry. आप लोगों को क्या पता है कि शुगर इंडस्ट्री में शुगर बनाया जाता है, और शुगर किससे बनाते हैं? शुगर केन जूस, जिसको हम क्या बोलेंगे? केन शुगर। ओके, तो केन शुगर से क्या बनाया गया? शुगर, और इससे जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है? मोलेसिस। ओके, अब ये जो मोलेसिस है इसमें भी क्या होता है? इट कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ शुगर। ठीक है, तो ट्रेसेस ऑफ शुगर है मतलब कुछ अमाउंट ऑफ शुगर यहाँ पे अभी बचा हुआ है इस प्रोडक्ट के अंदर। कौन सा शुगर है? इस केन शुगर के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? C12H22O11। ओके, तो ये शुगर है और ये इसमें मिला हुआ है आपको, मोलेसिस में मिला हुआ है। अब क्या करते हैं? मोलेसिस को जो यीस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन करवाते हैं। ओके, so it is produced by fermentation। ठीक है, फर्मेंटेशन किससे होता है? बाय यीस्ट। तो यीस्ट जो है वो दो टाइप के आपके एंजाइम सेक्रेट कर रहा है। किस तरह के? एक है इन्वर्टेज और एक है ज़ाइमेज। ओके, तो ये दोनों एंजाइम्स जो हैं वो सेक्रेट हो रहे हैं किससे? यीस्ट से, और ये दोनों ही एंजाइम्स क्या है? रोल प्ले करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय fermentation। So let's see how it is formed। तो फर्स्ट आपके पास में क्या है? केन शुगर है जो है C12H22O11। ओके, इसका क्या होगा? जो इन्वर्टेज एंजाइम है ये इसको कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। C6H12O6 प्लस C6H12O6। ओके, तो एक पार्ट इसमें क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, और एक पार्ट इसमें क्या हो गया? फ्रक्टोज हो गया। ओके, अब ये जो ग्लूकोज है
तो इन्वर्टेज एंजाइम ने जो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिया है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो भी है आपके पास में, इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, C6H12O6, ये यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के लिए है। इसको हम जाइमेज एंजाइम के थ्रू इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। Okay, so this is how ethanol is produced. Now we'll talk about the properties of ethanol. So first we'll discuss the physical properties. अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि इट इज ए colorless liquid at room temperature. Okay. दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए इसके बारे में, इट इज मिसिबल इन वाटर, in all proportions. ओके okay? तो ये क्या हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, हमें इथेनॉल की रिएक्शंस को जानना है कुछ. ठीक है, तो रिएक्शंस क्या है, जैसे इथेनॉल है C2H5OH, तो ये क्या है कि डिहाइड्रेशन हो सकता है इसका. डिहाइड्रेशन के लिए आपको क्या रिएजेंट चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इट एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो इससे आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, इथिन. ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन. क्लियर है. इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल. ओके, तो ऑक्सीडेशन के लिए आपको रिएजेंट्स पता होने चाहिए. ऑक्सीडेशन के लिए आपको केमिकल प्रॉपर्टीज का जो वीडियो था उसमें भी मैंने बताया, C2H5OH, इसको आप एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज व्हाट, एल्कलीन KMnO4. ठीक है, तो इस रिएक्शन से ये क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3COOH, इथेनोइक एसिड. अगर आप इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए रिएजेंट आपको क्या बताया होगा, C2H5OH, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, इथेनॉल CH3CHO. इसके लिए आपको जो रिएजेंट चाहिए वो है pyridinium क्लोरोक्रोमेट्स, को आप शॉर्ट में PCC लिख सकते हो, या फिर CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड. ओके, तो इस तरह से ये क्या है, इथेनॉल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. इसके बाद हम इथेनॉल की कंबशन रिएक्शन देखते हैं.
कंबशन में क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो C2H5OH प्लस O3, क्या होगा इसमें CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, 2CO2 और 3H2O। यहाँ पर आपके पास में हो गए 2 × 2 4 + 3 7 ऑक्सीजन, तो 1 यहाँ पे 3O2 लिख देते हैं, प्लस ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी कंबशन रिएक्शन की वजह से क्या है कि फ्यूल्स में, पेट्रोल में क्या किया जा रहा है, इथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, एस्टर फॉर्म होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको याद रखना है क्या होता है इसमें, ये जो इथेनॉल है C2H5OH, ये किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, RCOOH, ये होगा। इसके साथ इन एसिडिक मीडियम जो रिएक्शन है वो क्या होता है, RCOO C2H5 प्लस H2O। ओके, तो दिस रिएक्शन इज व्हाट, एस्टरिफिकेशन। अब ये जो एस्टर फॉर्म हुआ है, इसका प्रेजेंस का आपको कैसे पता चलेगा, कि इट इज व्हाट, ester, and it is having a sweet, fruity smell. ओके, तो आप जब भी क्या है कि इथेनॉल में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर रहे हैं, तो ईस्टर फॉर्म होगा, और ईस्टर की प्रेजेंस का आपको कैसे पता चलेगा, स्वीट फ्रूटी स्मेल से। तो इस तरह से आप इथेनॉल को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ इथेनॉल। तो यूजेस में फर्स्ट यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स, dyes. Okay, next it is used as organic solvent, used as disinfectant, disinfectant for skin before giving injection, blended with petrol to be used as fuel.
Okay, so these are some uses of ethanol. Now we'll talk about the next term which is related to ethanol, which is denaturation of alcohol. डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल में क्या है कि अल्कोहल जो है इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जा रहा है पेंट इंडस्ट्री में या बाकी इंडस्ट्रियल यूज किया जा रहा है। तो ये जो है अल्कोहल क्या रहता है, इथेनॉल जो है ड्यूटी फ्री रहता है, जिससे क्या है कि ये जो है चीपर रहेगा एज कम्पेयर टू अदर यूजेस। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्यों जरूरी है कि जो अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है वो जो अल्कोहल है उसमें क्या है कि वो ड्यूटी फ्री है और ये क्या चीपर अल्कोहल है एज कम्पेयर टू कि आप मार्केट में और किसी तरह से इथेनॉल को परचेज करें। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो इथेनॉल है इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सूटेबल नहीं रहने दिया जाता है। ओके, तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सूटेबल क्यों नहीं, कैसे नहीं रहेगा कि इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस ऐड कर देते हैं लाइक मीथेनॉल और जो है कॉपर सल्फेट या पेरिडीन। तो मीथेनॉल क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस है और पेरिडीन भी पॉइजनस सब्सटेंस है और साथ में क्या है इसमें एक स्मेल जो है वो आती है जो ऑब्जेक्शनेबल स्मेल रहेगी। इसके अलावा कॉपर सल्फेट जो ऐड कर रहे हैं इसकी वजह से क्या है कि इसमें ब्लू अपीयरेंस आएगी जिससे इसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अल्कोहल used in industry is made unfit for consumption by adding substances like methanol, pyridine, or copper sulfate to it. ओके, तो ये सब के सब क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस है। मिथेनॉल क्यों ऐड कर रहे हैं, पॉइजनस है। ओके, pyridine क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि pyridine में क्या है, पॉइजनस प्लस फोल स्मेल। ओके, और ऐसे ही क्या है कि जो कॉपर सल्फेट ऐड किया है वो भी क्या है, पॉइजनस, और पॉइजनस होने के साथ साथ ही क्या है, ब्लू अपीयरेंस। So this is all about the compound ethanol. We will move towards the next compound which is ethanoic acid. तो इथेनोइक एसिड में क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो नेम है ये इसके सोर्स की वजह से डिराइव्ड है। सोर्स क्या है इसका, विनेगर होता है ना। तो
Name acetic acid is derived from Greek word acetum, stands for vinegar. ओके, तो विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड का ही एक सॉल्यूशन है या इथेनोइक एसिड का ही सॉल्यूशन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेनोइक एसिड का क्या रहेगा? CH3COOH। ओके, और इसका स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो ये इस तरह एसिटिक एसिड का जो है स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, इसमें ये जो हाइड्रोजन है आपको दिख रहा है, this hydrogen is lost by acetic acid as hydronium ion, which forms H3O plus in aqueous solution. That's why it behaves as an acid. Okay, so let's talk about the properties of acetic acid. First, we'll talk about the physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज में एसिटिक एसिड क्या है? आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या है, एक लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, बट इफ यू विजिट द लैब इन winters, then you may find it as a solid. Okay, so it is a colorless liquid at room temperature. Okay, pure ethanoic acid is also known as glacial acetic acid because it freezes at 16.7 degrees Celsius as a white crystalline solid. ओके, तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह क्या हो रहा है? फ्रीज हो रहा है, तो विच अपीयर्स एज ए ग्लेशियर, जैसे उसमें आपको जो स्नो है वो दिखाई देता है वैसा अपीयर होगा, so that's why it is being said as glacial acetic acid. Okay, now we'll talk about the chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात क्या है? एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर जो है
इथेनॉइक एसिड के लिए CH3COOH plus H2O. It will form what? CH3COO minus plus H3O plus. तो ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो गया. This is why it is acting as an acid. Now it is an acid. So ethanoic acid is an acid. So it will show some common properties of acid, which is like it releases hydrogen gas when reacted with a metal. Let's see this reaction. Reaction with metal. मेटल के साथ में जैसे CH3COOH प्लस Na सोडियम मेटल के साथ हम इसको फिल कर रहे हैं. क्या होगा? CH3COONA plus H2. So hydrogen gas is being released. So this is acting as an acid. Now reaction with strong alkali. तो एल्कली के साथ आप इसको रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा? CH3COOH plus NaOH. It will give you what? CH3COONA plus H2. So it is forming solvent, water. It is also a common reaction given by acid. Similarly, you can treat it with potassium hydroxide. Then you will get what? CH3COO plus H2. Now reaction with carbonate, bicarbonate salts. तो इन रिएक्शंस में क्या होगा? इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से हम रिएक्ट करा रहे हैं. तो एसिड्स क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स के साथ CO2 लिबरेट कराते हैं. तो CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2. ये एक रिएक्शन हो गया. ऐसे ही हम क्या है? CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. इसको ट्रीट करेंगे तो CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2. रिएक्शन को बैलेंस करना है तो okay. So now the reaction is balanced. These are the common properties shown by acids. So this is the acidic behavior of ethanoic acid. Now we'll talk about some more reactions which are due to the presence of OH group. PCl3
PCl5 and SOCl. Okay, so first we will see the reaction with PCl3, CH3COOH plus PCl3 with CH3COCl plus H3PO3. Okay, so to balance this, we get now the reaction with PCl5 CH3COOH plus PCl5 will give you CH3COCl plus COCl3 plus HCl. Now the reaction with SOCl2. It will give you CH3COCl plus SO2 plus HCl. Now the decarboxylation reaction. डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एलिमिनेट होता है कैसे एलिमिनेट होता है तो CH3COH इसको पहले हम इसमें कन्वर्ट करेंगे एक सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे लाइक NaOH से आपने ट्रीट किया तो CH3COONA अब ये जो सॉल्ट है ये फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा in presence of calcium oxide will heat it तो आपको क्या मिलेगा CH4 plus Na2CO3. Okay, so this is what decarboxylation reaction is. Now we'll talk about the uses of ethanoic acid. Uses of ethanoic acid. Ethanoic acid की जो uses है उसमें as a descaling as agent for household appliances. तो इसके लिए क्या है कि जैसे हाँ आपके जो टैप्स वगैरह हैं उसको डीस्केल करना है तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड यूज किया जाता है ओके ऐसे ही इन फूड इंडस्ट्री it is used as acidity regulator
used for acidity regulation. Next, it is used in the production of various compounds which are involved in production of or manufacturing of polymers like cellulose, polyurethane. Next, it is used in the manufacturing of polymers which are used in synthetic fibers, synthetic fabrics, wooden glues, these substances. So let's write about this. Used to produce compounds which are used to manufacture polymers used in production of synthetic fibers, synthetic fabric, wood glue, and soft drink bottles. So these are the uses of acetic acid. Next, we'll talk about the soaps and